Hello, everybody. We are live today again. This is Vishu Rajpal from Vibe Adda, and the basic motive of here is your growth is our vibe. We convert imaginations into reality. So हमेशा हम लोग सोचते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में हम लोग सोचते हैं, बट मेन चीज़ हमारे साथ रह जाती है वो है एक्सपीरियंसेस. कभी कभी हम नॉलेज गेन करने के लिए बाल सफ़ेद करने का वेट करते हैं, लाइक पीपल से. बट नाउ टुडे वी हैव अ गेस्ट ऑफ अस who is no, I'll tell you, बाल सफेद नहीं हुए हैं, but yes, experiences matters. So let's invite Mr. Dhruv here so he can better introduce himself, and then straight away we'll ask the questions. Hi Dhruv, welcome to Hello. Vibe Adda. Very excited to talk to you. So, good evening Dhruv. Yeah, so the basic goal of Vibe Adda is your growth is our vibe. Okay, this is our tagline. Correct. So what I want is, सबसे पहले तो we are young people. I am also 16 years and you are also 16 years. So when two 16-year people talk, Yeah. so थोड़ा सा funny session रखते हैं. देखो हंसना नहीं चाहिए, माना एक दो बाल सफेद है लेकिन चलता है इतना तो. So वो let's चलता है not वो laugh on नॉर्मल it. है So नॉर्मल. चलो बच्चा समझ के माफ कर दूंगी. चलो straight away introduce yourself to my audience and then quickly we'll start the session. Myself, Dhruv, and I work in a very beautiful space called Ministry of New. It's a beautiful Okay. co-working space where shoots Okay. happen, events happen, community builds, and it's a very beautiful space. So if you search over online also, it's a space where teams connect. Actual basis, Oh, there are many co-working spaces in Mumbai also, we work and many. But this is something different. So when I came over here like 3, 4 years back, I learned okay. that how to connect with people emotionally, mentally while working with yourself. So Correct. it's a very so when you search also or talk to your people over here, you understand the idea. As your idea is to create the imagination into reality, it's the same thing. You bring Oh, the great, great. people out over here. So You I'm in doing what your section you are I'm working? What doing vertical you are working with marketing, them? sales. So, like you said, you are in marketing and sales, correct? Correct. Yeah. So I have a very interesting question for you. You are in marketing and sales. So tell me honestly, have you ever sold something which you didn't even believe in? Yeah, many things. So the prime rule of marketing is गंजे को कंघी बेच सकते हो then you can do the marketing. Simple is you sell the product which you don't like also. You just chipka off by the product. Very That's the true. main motive of marketing. And I'm doing that. So I'm a गुज्जू. Correct. और हमें अगर बेचना नहीं आएगा तो गुज्जू पे लानत है यार. Okay. So when I come from a हाँ, ये background तो एक where पॉइंट है. my ये ऐसा my क्यों mom कहा जाता है वैसे? ऐसा क्यों कहा जाता है? because Gujjus are a prime example of selling. धंधा है तो गुज्जू है. Yeah. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. नहीं, ऐसा तो Yes. बहुत सारे अलग अलग वर्टिकल्स में कहा जाता है. सिंधी के लिए भी बोला जाता है, बनिया के लिए भी बोला जाता है, बट गुज्जूज आर ऑन द Correct. टॉप एंड आई हैव सीन मैनी आल्सो. आई हैड अ गुज्जू वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन इन माय कॉलेज एंड आई हैव सीन हिम. मतलब वो कॉलेज में खड़ा होके अपना बचा हुआ ग्लास उसको, वी यूज्ड टू हैव एप्पल शेक इन आवर कॉलेज, Correct. और अगर उसका पेट भर जाता था तो वो आधा ग्लास भी सेल कर देता था, झूठा ग्लास भी सेल कर सकता था. ही हैड दैट मच टैलेंट and गुज्जू के I know पास he must कहीं be से भी doing, पैसा है. some wonders in They the. love it. Uh-huh. Correct, Yeah. correct, correct. Yeah. Chalo, I'll move to my next question, which is quite impressive. If Ministry of New was a person, then how would you describe the personality? I will describe this personality as a person who is friendly, loving, caring for everyone. It's a thing which enhances everyone's Mm-hmm. inner self. And I would personally say, matlab, this shouldn't be like a Mm-hmm. motivation talk, but I always feel like people who connects with each other, no, they have a better business mind also, business space also, and better work culture also. Correct.
Yeah. Yeah. Okay. Like we discussed, your company is into multiple events. Okay, right. So, what I want to Yeah. know, of course, everything doesn't come with ups. There are ups and downs both, whenever you're Correct. doing anything. So, is there any event in your life, while working with Ministry of New, that went completely wrong, but it gave you a very big experience, something which you learned and you are never going to repeat that out? Can you please tell us about it? So, Ministry of New, and I also do events, pop-ups over outside also. So I've been in many pop-ups, which Wayville and many big Mm-hmm. brands I have been part of. So in every pop-up, you learn something because logistics are different or things are different. You make mistakes. So when you make mistakes, that part of you makes you learn that no, now I want to do something more next time, which at least don't make that same mistake again. कुछ नई मिस्टेक करो ना. So there's a very beautiful quote Okay. said by Virat Kohli only कि if you are repeating, do the mistakes, do 100 mistakes, but don't repeat that mistakes. Mm-hmm. Yeah, so that's it. Correct, Hello. correct. That's true, actually. Yeah, We should not repeat the mistakes. Whatever mistakes we are doing, we should not repeat them. That is the biggest lesson, I believe. So, do you ever sleep correct. also in any of your events? Like you handle sales, contents, pop-ups, or it is just networking your cardio? Networking, my means when I'm talking to someone, I never feel sleepy, and that's not a thing like I get bored or something like that because that's my passion. I'm communicating with Okay. you. I'm loving to talk to you. This is my and I मतलब अंदर से है यार. The things you love, you don't get bored for that. Okay, and what if you have to choose one thing, event management, social media, sales, or content creation? Who are you amongst all the options? Sales, sales. Oh wow, seriously? I thought you will always choose content creation because I have seen your content. It is amazing. Content creation is my passion. Sales is my Okay. upbringing. So when in Uh-huh. childhood, I used to do small things also. Used to sell it. I love to sell. So when you sell, Okay. everyone there is a matlab, there is a receiver, there is a buyer. But more than that, you tell a story of a product. मतलब वो प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं that doesn't matter also. तुम उसको कैसे बेच रहे हो ना that's more important. And in That's sales, matter. I have Yes. make multiple connections of mine. That connections which I will never lose Correct. it. They are the beautiful gems I have got in Correct. sales. Correct, correct. So this going into marketing or sales thing, was it planned or just गुज्जू है तो इसमें ही जाना है? Accidentally you entered this thing, or was it a planned vision of yours कि मुझे तो marketing और sales में ही जाना है, मैं गुज्जू हूँ? My life is only not planned. So my life is like a crossover. You do. मतलब अभी ये फील्ड है अच्छी लग रही है करो ऊपर वाला है if you're doing great then he will help you out. Okay. And what about what do you think? What people basically do mistakes while they are into marketing? Because I've seen many people, they say, sorry, I am not provoking any religion or any particular city, state. I am not saying anything wrong. Like लोग बोलते हैं मैं बनिया हूँ, मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं गुज्जू हूँ, मैं बेच सकता हूँ. इस कॉन्फिडेंस में ना लोग आगे बढ़ जाते हैं. Okay, but Correct. they do many mistakes. So what do you think, what is the basic mistake the people do today in marketing? Only the simple mistake what I think people do is the people sell the product. You don't have to sell the product, you have to get attached to the customer. अगर तुम आईफोन बेच रहे हो सिंपल तो वो तुमसे ही क्यों लेगा द ओनली रीजन वो तुमसे लेगा बिकॉज ही इज कनेक्टेड विथ यू
if you go to a vegetable seller, which is a very small thing, but you will go to that seller only who gets connected, वो दो बातें तुम्हें मस्ती की बोल देगा, या कोई फन बातें कर देगा, या लेडीज लोगों की तारीफ कर देगा, आपको बोल देगा कि आप अभी 16 साल के ही लग रहे हो, तो आप वहीं जाओगे. Correct. So that's the beauty, no? You have to get connected to the person or the buyer or the receiver. If you do that, then the sales is nice. And if you don't, because the people try to Correct. just sell the product, then नहीं होगा. वो बंदा क्यों ही तुमसे लेगा? करेक्ट, दैट्स ट्रू एक्चुअली. बट लेकिन मैंने एक चीज देखी है, अगर हम इवेंट्स की बात करें, हमारी सबकी लाइफ में जरूरी नहीं है कि मुझे या आपको जॉब करनी जरूरी है. ठीक है, आप जॉब कर रहे हो, यू आर मैनेजिंग इवेंट्स. आई एम अ मॉम, मैं हर साल अपनी बेटी का बर्थडे ऑर्गेनाइज करती हूँ. दैट इज ऑल्सो एन इवेंट, यू नो. There are Correct, many correct. parents who do their kids wedding and birthday parties, and so events are part of everybody's life, you know. So Life. what do you think, what is that one thing which makes the event successful? Chahe, because I have audience, I don't have only that audience जो इस category के हैं. I have many moms, I have, you know, many who have their brothers or sisters on the urge of getting married. So क्या ऐसी एक चीज है जिससे आप इवेंट को सक्सेसफुल बना सकते हो, किसी भी So इवेंट को? इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए जस्ट एक इवेंट के लिए द डेडिकेशन चाहिए, एंड सेकेंडली एक टीम चाहिए. मेनली एक टीम चाहिए जो तुम्हारे Okay. साथ काम करे, तुम्हारे लिए काम ना करे, तुम्हारे साथ काम करे. Mm-hmm. There's a major difference in this, because if you work together, no, you will tend to make less mistakes. Mm-hmm. मिस्टेक्स होगी, चीजें भी कहीं Okay. फंबल होगी, Mm-hmm. बट जब वो फंबल होगी ना, तो Mm-hmm. वो तुम्हारी टीम एज अ बैकअप तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी. So Correct. even a very successful event planner also have their backups ready. When you have your backups ready, you have a Mm-hmm. team ready, it's always that you will make lesser mistakes and शायद से no mistakes. करेक्ट, करेक्ट, दैट्स Yeah. वेरी ट्रू. आई बिलीव एक्चुअली. एंड मुझे ऐसा एक चीज हमेशा से लगती है कि हर चीज की होती है कम्युनिकेशन, वेदर इट इज रिलेशनशिप, वेदर इट इज बिजनेस, सेल्स, कुछ भी कर सकते हैं हम. तो क्या आपको लगता है कि सेल्स आना एक नेचुरल पार्ट है, मतलब ये ऐसे ही आ जाता है, या यू हैव टू लर्न इट, मतलब ये कुछ सीखने की चीज है? सेल्स आता, वो आई थिंक तो नेचुरली आता है, बिकॉज वो इंट्रोवर्ट्स को थोड़ा टफ होता है कि एक्सट्रोवर्ट्स हमेशा मिलजप जल्दी करते हैं, बट उसको पॉलिश करना, यू आर अ स्टोन, उसको पॉलिश करके अच्छे से करना, वो इम्पोर्टेंट है. आ तो तुम्हें ओके. जाएगा, बिकॉज तुम्हारे खून में है बोलना, ये चीजें हैं कि तुम बोल दोगे, कि तुम कन्विंस कर दोगे, बट अगर हायर स्किल पे जाना है तो तुम्हें क्या टर्म्स लेके जाना है, क्या पॉलिश कर सकते हो तुम, जिससे तुम्हारी सेल्स और बढ़ सके. करेक्ट. सो दैट्स इम्पोर्टेंट. या. Correct. And since you are handling, you know, multiple professions, I really am excited to know how you handle so many things all together. Means you have any super wings, or you handle with, you know, by making it a proper सब एक प्लान रहता है कि मैं ऐसे प्लान करके चीजें करनी है. You make a to-do list, or what you do? I really want to know, because there are many people who are doing multiple things, but management उनका खराब है. So in morning when I wake up little early. When I wake up, no, I always feel firstly I give time to my events, social media, wedding part, whatever I have to do. I give that 2-3 hours over there. Then I have a job from 12 Okay. o'clock. So 12 to 8, I be over Okay. here. In middle, if something is Okay. urgent is there, I communicate, I do the work over here at a space also, and I do the work of ministry also. So when I Okay. mix up both, and after that, after 8 o'clock, I do again. Okay. So when it is a mixture, and the influencing thing I have strictly done on Saturday, Sundays only. So all the collabs Okay. and everything you are seeing on my page, it's all Saturday, Sundays only.
Okay. And coming to the collabs part, I'll clearly ask. There are so many people who want to become an influencer or content creator. You can say anything you Yeah. want to. Okay, there are many people who want to create some good content, but वो कहते हैं ना एक start मिलना उनको बहुत ज़रूरी है. I recently met a lady. She wanted to start content creation. So when I saw her page, वो उनका पेज was full of इधर उधर का सब कुछ, लाइफस्टाइल भी, Correct. मॉमी भी, ट्रैवल भी, ये भी वो भी. So of course, selecting niche is very important. But what is Correct. that one thing as per you which can help them in content creation and growing and getting brands? ये आप कैसे Hmm. उनको गाइड कर सकते हो? Means how can it help them? Firstly, when I came into content creation, use your contacts. I'm being very blunt towards it. Firstly, use your contacts. Make 2, 3 videos, make with Mm-hmm. brands. It will be barter, but do it. When you do that, Okay. no, initially, Mm-hmm. then you get brands on Mm-hmm. board. And I think Mm-hmm. so. I initially 3 to 4. I had called people कि अरे यार तुम्हारा भाई चालू कर रहा है यार तुम लोग क्या नहीं करोगे मेरे साथ and legit brands I Correct. know because of the pop-ups I called them and personally and they were very kind to me so I Okay. always tell everyone the people whom I am surrounded with they have been very kind to me in my life so Mm-hmm. uh, how you go with that no after that tell brands that now I wanted to start brands will come to you you don't have to approach them also and if Okay. you have to you do a template send to all Mm-hmm. brands, send 50 brands, 60 brands, 80 brands. There Okay. is a simple rule. You will only get rejected, they won't kill you. Okay. Correct. You just send a message, they will see your profile. If they like it, they will approve you. करेक्ट. सो ध्रुव, ऐसा Don't give आपके साथ over. बहुत बार हुआ होगा ना, जब आप भी रिजेक्ट हुए होगे, या कभी आपको फील हुआ होगा कि यार मेरे साथ कुछ वर्क ही नहीं कर रहा है. ऐसा हम सबके साथ कभी ना कभी होता है, इवन इफ कितनी वी डू बार? मल्टीपल थिंग्स, बट ऐसा होता है. सो उस पॉइंट पे व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड, व्हेन यू फील यार कुछ काम नहीं कर रहा है? सिंपल चीज है. रिजेक्शन अगर नहीं है तो लाइफ क्या है? सिंपल. इफ सेल्स इफ यू टॉक अबाउट सेल्स ओनली, सेल्स का सिंपल रूल है. 100 लोग रिजेक्ट करेंगे, 1 लोग पास करेंगे. ढीठ बनना पड़ेगा. बट मेरा सही सिंपल बात है. फंडा है जब तक तुम्हें लोगों के सामने कोई रिजेक्ट नहीं कर रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है ना वो मुझे कभी जिंदगी में मिलने वाला है ना मैं उसको कभी जिंदगी में मिलने वाला हूँ उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया करेक्ट. मैंने करेक्ट. उसको रिजेक्ट कर दिया खत्म जब 5 साल के बाद मैं बड़ा इन्फ्लुएंसर बनूंगा तब वो मेरे पास आएगा तब मैं उसको रिजेक्ट करूंगा सिंपल परफेक्ट. यस. बट इसी रिजेक्शन से एक चीज मुझे याद आई. कुछ लोग ना छोटी छोटी चीजों को दिल पे ले लेते हैं. सो व्हाट इज दैट वन टिप यू वांट टू गिव टू पीपल विद द डिफरेंस बिटवीन रील एंड रियल लाइफ? यू डोंट थिंक भाई 10 चीजें हैं जो दिन में चल रही है 10 चीजें हैं जो लोग बोल रहे हैं you only listen to the closed ones whom you love. If you are working in an office, your boss is saying you XYZ things. If you are working somewhere, if you're going on the road, 10 लोग तुम्हें चीजें बोलने वाले हैं. But you should always bifurcate whom is your priority and who is not your priority. I have a very clear factor. If my friends say me Okay. something, if my closed ones say me something, I will accept it. And I trust them. They won't say me anything bad. Okay. But if someone else say me, I'm like, okay, don't react. If you react, that comes outburst comes. You just have to say, okay, Correct. khatam. And the most important questions of today's session I want to ask, if for example एक 19 साल का ध्रुव इस सेशन को देख रहा होगा, तो उसको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैं उसको यही एडवाइस देना चाहूंगा कि तू जो कर रहा है वो बेस्ट कर रहा है यार करता रहे आगे जाके तू सक्सेसफुल होने ही वाला है Yes, I'm so here. I so I'm not saying in that arrogance also but I have that faith in me that मैं होऊंगा because you know that's a very beautiful thing I have learned from people also around me
तुम अगर सबको साथ में लेके चलते हो ना लाइफ में, इफ यू आर ग्रोइंग एंड यू मेक एवरीवन ग्रो टुगेदर, सो तुम पक्का लाइफ में सक्सेसफुल होंगे ही, देयर इज नो डाउट इन इट। बिकॉज कभी तुम्हारा अगर कनेक्शन लो पड़ गया ना, तो तुम्हारा जो बाजू वाला होगा ना, उसका कनेक्शन हाई हो जाएगा। एंड एवरीथिंग वॉट एवर गुड यू गिव इन द यूनिवर्स, इट ऑलवेज कम्स Correct. टू यू बैक। I या will quickly say one thing learned, like I said. Okay, in महाराष्ट्र एंड गुजरात में इट इज मोर। जन्माष्टमी आती है तो दही हांडी होती है, ठीक है। तो दही करेक्ट हांडी में क्या होता है, एक के ऊपर एक आता है। इट इज अ टीम वर्क, यू नो, दे कम, और जो सबसे ऊपर वाला होता है वो मटकी फोड़ता है, लेकिन जो एफर्ट है वो हर एक मेंबर का काउंट होता है, इवन करेक्ट जो लोअर लेवल पे भी होता है। वन करेक्ट। वन थॉट इज दिस, ठीक है। एक दूसरा थॉट ये भी हो सकता है कि जो सबसे नीचे है वो सोचे, यार घुटने तो मेरे टूटे, मटकी ऊपर वाले ने फोड़ दी, यहाँ पैर मेरे टूटे, मटकी ऊपर वाले ने हाँ फोड़ दी। सो इट इज इवन, यू नो, आई ऑल्सो बिलीव विद योर व्हाट यू सेड, दैट टीम वर्क ऑलवेज टेक्स यू टू अ न्यूअर लेवल। एक अलग ही दिशा मिलती है, यू नो, लाइक इन हिंदी वी से, एक अलग ही लेवल ऑफ अगर अचीवमेंट हम ले सकते हैं। अगर तुम्हारे घर का स्टाफ से लेके तुम्हारे घर का जो अपर हैंड है, कोई भी अगर तुम्हारा साथ छोड़ देगा ना, तो तुम वो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाओगे। बिकॉज दैट द करेक्ट। स्मॉल पर्सन ऑल्सो गिव्स यू दैट लिबर्टी टू गो आउट। एज यू आर अ मदर, आपके घर पे कोई मेड जाती होगी या वो आती होगी, वो आपको लिबर्टी दे रही है कि आप यहाँ पॉडकास्ट कर सकते हो हमारे साथ। करेक्ट। So, so वेरी ट्रू। everyone is compiling together. That's why we are building a very beautiful empire. Correct. And finally, I'll come to my last question. Where you see in next 5 years yourself? In next 5 years is like it's little arrogant, but अगर मैं थोड़ा तौश में बोलूँ तो मतलब बिलबोर्ड पे मेरी शक्ल दिखेगी। No, that is okay. See, dreaming is never bad. You know, I will always say one thing. We, of course, have a huge age gap. You know, I still count myself. My all of my friends No, say that you this, count yourself there in is a no, 60. there is Means no age gap. There is no age gap between us. You are sweet 16. Yes, I am. Even, you know, I have a daughter. She is 10 and a half. और मेरे मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं कि अगर इस घर में कोई बड़ा समझदार बच्चा है तो दैट इज योर डॉटर। ओके, सो दिस इज द थिंग। सो एनीवेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई विल कंक्लूड द सेशन here with, you know, one simple thing I would love to say. Dhruv, I have seen you growing. I have seen your content. Okay, what makes me what makes you are here because of your content, what you did. I Correct. really loved it. You, the way you talk to people, the way you bring, you know, you show people that जरूरी नहीं Correct. है कि एक्सपीरियंस 40 साल में आता है, एक्सपीरियंस 30 साल में आता है। यू कैन गेन एक्सपीरियंस व्हेन यू आर 10 years ऑल्सो, यू कैन गेन एक्सपीरियंस व्हेन यू आर 12 years ऑल्सो। एक्सपीरियंस की Correct. कोई एज नहीं होती है। नहीं होते। So that's a very true fact which I have learned after watching your content and after this, you know, a beautiful conversation with you. Thank you so much, Dhruv, for coming, and I would love to see you in more of the live sessions so that we can encourage that young Always there crowd for you. who is still struggling either with their jobs. Yes, thank you so much. There are many people I see struggling with their jobs or doing in content creation. Wish you all the best for your future. Thank you so much, Dhruv. Thank you. Thank you. Yeah. Yeah, welcome. Bye bye. So we were live with Dhruv. Thank you so much, everybody, watching us. And Vibeda will keep on bringing you so many new videos where you get more information. Thank you so much. Bye bye.